part of the lesson, photosynthesis, is photorespiration. See, try to recollect. We have completed entire light reaction, cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation. Light reaction occurs in grana. We have studied structure of thylakoid. In reference to cyclic, non-cyclic photophosphorylation, we studied proton pump. Product of light reaction, ATP and NADPH, which goes in dark reaction. And in dark reaction, we studied two methods of glucose formation, that is CO2 fixation, that is C3 cycle, Kelvin cycle. Other one, C4 cycle and HSK pathway. Are you getting the points? तो हमने ये पूरा सीख लिया. इसके साथ साथ we have just got an introduction in previous lecture about the word photorespiration. Okay, photo light respiration is taking in CO2, giving out O2. Is it? ठीक से सुन रहे हो? नहीं. Respiration is taking in O2 and giving out CO2. Right? So, light induced respiration like process is photorespiration. Light induced respiration like process is photorespiration, जिसमें डे टाइम में ग्रीन सेल, ड्यूरिंग डे टाइम green cell will use oxygen and will give out CO2. So it is respiration like process occurring in green plant cells when light is available. It's called photorespiration. Please go through the diagram. See, in the diagram, you can clearly see three bifurcations. Total diagram को मैंने 3 compartment में divide किया है. See, this is the upper part. This is the upper compartment. It is chloroplast. ऊपर का compartment क्या है? Chloroplast. Right? ये second one. This compartment is peroxisome. याद करो, lesson cell. We have studied some microbodies, peroxisome, glyoxysome, right? और एक ऐसा शब्द सुना था, spherosome. They are tiny organelles present. So, ऊपर का reaction chloroplast में होगा, यहाँ से यहाँ तक peroxisome, and the last step of the process will occur in mitochondria. So, this process of photorespiration, light-induced respiration-like process in which green cell uptake oxygen and give out CO2. So, light-induced process होगा, light के presence में ही ये process होगा. It involves 3 organelles, chloroplast, peroxisome and mitochondria. Right? चलो, इसके पहले हमने एक छोटा सा डायग्राम इस प्रकार का देखा था, that this is the enzyme Rubisco. RUBP, carboxylase oxygenase. Okay, what's its normal role? We have discussed in C3 cycle that if Rubisco is provided, sorry, if Rubisco is provided with abundant amount of CO2. Rubisco is provided with abundant amount of CO2. One more thing, under low temperature. If these two conditions are there, CO2 concentration is high and atmospheric temperature is less. In that situation, Rubisco will combine with, Rubisco will catalyze combining RUBP, right? So RUBP plus CO2, this reaction is catalyzed by Rubisco and it will initiate the process of C3 cycle. But right now it is not happening.
We are not talking about this process. ये ऐसे नहीं हो रहा है. तो क्या हो रहा है? Temperature is high, CO2 concentration in atmosphere is low. In that situation, through open stomata, oxygen, atmospheric oxygen will come in. Instead of going for carboxylation of RUBP, Rubisco is catalyzing, or Rubisco start working as the enzyme which causes oxygenation. Oxygenation की activity Rubisco करवाएगा. So oxygen, right? That is O2 वाला, atmospheric O2 plus Rubisco, which is Rubisco is catalyzing. So O2 plus RUBP catalyzed by Rubisco, RUBP oxygenase will produce two chemicals, right? So it is the reaction, see, atmospheric CO2, RUBP plus oxygen catalyzed by Rubisco. Okay, RUBP oxygenase is catalyzing this chemical reaction and giving you two products. अब आप जानते हो RUBP is 5C, it is only oxygen, atmosphere से CO2 आ ही नहीं रहा है. So this 5C carbon, 5C compound RUBP cleave or split up into two parts. One is 3C, this is 3-phosphoglyceric acid, you know the name. Okay, 5C break up into 3C, 3-phosphoglyceric acid, and a 2C chemical, that is phosphoglycolate. 5C RUBP break up into 3C PGA and a 2C chemical, phosphoglycolate, which initiate the process. Right. What happened to this 3-PGA? It become part of C3 cycle. Okay, listen, take a listen. Plants its own RUBP, which contain 5 carbon atoms of the plant only. प्लांट के खुद के ही 5 कार्बन में से 3 कार्बन वाला PGA C3 साइकिल में गया. तो बाहर से कार्बन नहीं आया है, ग्लूकोज बनने का सवाल नहीं उठता. ओके, हमने याद करो C3 साइकिल में हमने क्या सीखा था? 5 carbon given by RUBP plus 1 carbon coming from atmosphere will go for glucose formation. That too 5 carbon are regenerated. RUBP ने 5 कार्बन डाले, बाहर से एटमॉस्फेयर का 1 कार्बन आया, वो एक ही कार्बन से ग्लूकोज बना. 1/6 कार्बन go for glucose formation, remaining 5/6 are recycled. Right? So बाहर से अगर कार्बन आता है तो ही फायदा होता है, ग्लूकोज बनता है. खुद के ही 5 कार्बन डाले और उसमें से एक 3C केमिकल बनाया और एक 2C केमिकल बनाया. राइट, 3C कार्बन, 3C वाला PGA goes to C3 cycle and 2C chemical phosphoglycolate will initiate this process. दोनों में अंतर समझ रहे हो ना? C3 साइकिल ने, प्लांट ने RUBP पे का 5 कार्बन, मीन्स समझ लो खुद के 5 लाख डाले, बिजनेस शुरू किया, बाहर से 1 लाख लाया और प्रॉफिट 1 लाख निकाल लिया. 5 लाख से बिजनेस करता गया. तो प्रॉफिट का बिजनेस 1 लाख 1/6 कार्बन से ग्लूकोज बनता गया. वो यहाँ बाहर से कार्बन आया ही नहीं, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, खुद के ही 5 लाख उसने डाले, उसमें के 3 लाख, उसमें के 2 लाख, 3 लाख से फिर से C3 साइकिल रन हो रहा है, लेकिन इसमें ग्लूकोज बनेगा ही नहीं क्योंकि खुद का ही डाल रहा है. प्रॉफिट का बिजनेस नहीं होगा. राइट? ओके, सो आई रिपीट, व्हेन टेम्परेचर इज हाई, CO2 concentration is less. In that condition, RUBP is undergoing the process of oxygenation under the process of biocatalyst enzyme Rubisco. Right? RUBP oxygenase activity is initiated. So RUBP plus oxygen. Okay, this process is started in which RUBP is 5 carbon that divide into 3C and 2C. 3C goes in C3 cycle, wherein glucose formation is not a business of profit in which glucose is prepared. खुद का ही कार्बन उसमें जा रहा है. What left? A 2C fragment which is phosphoglycolate. Now look at the chemical. Phosphoglycolate undergo dephosphorylation. तो देखो phosphoglycolate का phospho निकल गया तो आपको क्या मिलेगा? Glycolate. Okay, as I told you, always remember names of the chemical. Name of the chemical will give you idea about the chemical reaction. So phosphoglycolate is dephosphorylated
to form glycolate. Right? Glycolate is synthesized in chloroplast. This glycolate goes to peroxisome, and in peroxisome, this glycolate combines with one more molecule of oxygen, and it will give out H2O2, hydrogen peroxide, which is a poisonous chemical. H2O2, which is a poisonous chemical. Right? So this poisonous chemical is a damage causing to the cell. It may oxidize so many chemicals present in the cell. तो ऐसे पॉइजनस केमिकल को डिटॉक्सिफाई करने का काम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई करने का काम पेरोक्सिसोम करेगा. Right? So that is the role. Peroxisome is such organelle which detoxifies the poisonous chemical produced in the cell. Okay, and in this process, glycolate plus oxygen producing H2O2, hydrogen peroxide, which is a poisonous chemical, will be detoxified. Water is given out. Okay, then glyoxylate. Okay, phosphoglycolate plus oxygen giving you glyoxylate. नाम की तरफ देखो. Phosphoglycolate gives out phosphate, you get glycolate. Glycolate plus oxygen, glyoxylate. Oxygen जो add हुआ, right? Now, glyoxylate, these are all 2C chemicals. Okay, ये सब के सब क्या है? These are all 2C chemicals. This glyoxylate is aminated. Okay, अब aminated and all these chemical reaction you will discuss in chemistry, right? So this glyoxylate is aminated, amino group is added in it to form a amino acid glycine. It will form a amino acid glycine. Glycine, which is synthesized in peroxisome, will go to mitochondria. See, as I said, there are 3 organelles involved in the process. It will go to mitochondria. In mitochondria, एक बार ये प्रोसेस हुआ, 1 ग्लाइसिन बना. समझ लो दूसरी बार ये प्रोसेस हुआ तो 2 ग्लाइसिन बने. Same process. One time happened, you get 1 molecule of glycine. Second time happened, you get 2 molecules of glycine. So what happened? This 2C glycine plus this 2C glycine, 2C glycine will combine. Okay, 2C कितने हो गए? 4C. Among these 4C, 1 CO2 is given out. 4 में से एक CO2, एक कार्बन चला गया, and what left is 3C. 2 molecules of glycine will be having 4 carbon. Among the 4 carbon, 1 CO2, 1 carbon is given out, and 3 carbon are utilized for the formation of serine. So here what we can conclude? In the process of photorespiration, among the 4 carbon, 1 carbon is given out. Okay, among the 4 carbon, 1 carbon is given out, and 3 carbon are recycled back. मतलब ये wasteful process शुरू हुई. इसमें यहाँ पे 4 कार्बन वेस्ट होने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन प्लांट ने 4 में से एक कार्बन गवा दिया. But plant was successful in holding 1 carbon back. Sorry, plant was successful in holding 3 carbon back. ये 4 कार्बन में से एक कार्बन 1/4 कार्बन वेस्ट हो गया, लेकिन प्लांट ने 3 कार्बन, 4 में से 3 मतलब 3/4 कार्बन कॉन्जर्व कर लिए. और कौन सा केमिकल बनाया? सेरीन. Serine is synthesized in mitochondria, is transported to peroxisome. Then serine will be giving you hydroxypyruvate, right? Then again it is reduced to glycerate, and glycerate, which is transported to chloroplast, will become 3-phosphoglyceric acid. Okay, phosphoglyceric acid शब्द जानते हो ना, PGA. Okay, तो ये क्या है? ग्लिसरेट. Glycerate is glyceric acid, Ga, glyceric acid. इसमें phosphate add हुआ तो क्या बन गया? 3-PGA, because phosphate is added to the 3rd carbon. Okay, and this PGA will again go in C3 cycle. Okay, so यहाँ पे C3 cycle PGA के साथ चल ही रहा है. C3 cycle is happening, but
ये जो बिजनेस हो रहा है, ये जो C3 साइकिल चल रही है, इसमें जो कार्बन है वो कार्बन प्लांट खुद का ही डाल रहा है। बाहर से कार्बन प्रॉफिट, बाहर से CO2 ला के प्लांट ग्लूकोज नहीं बना रहा है। तो ये C3 साइकिल चल रही है। PGA गया, जितने पागल बने वो पूरे के पूरे RUBP के रीजनरेशन में यूज हुए। राइट, यहाँ पे जितने भी कार्बन है वो पूरे के पूरे रीजनरेशन में यूज हुए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनेगा। इट इज नॉट अ बिजनेस ऑफ प्रॉफिट, नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। राइट, आई नो दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो आई एम रिवाइजिंग। लिसन, अब थोड़ा और डिटेल। पहले हमने ये प्रोसेस सीख लिया, राइट। हम पहले रट्टा मार लेंगे, ठीक है। चलो फॉलो मी। फोटो रेस्पिरेशन, लाइट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन लाइक प्रोसेस occurring in green plant cells under high temperature, low CO2 concentration. Rubisco undergoes oxygenase activity only. In this, C3 plants perform CO2 is not participating, so plants are performing RUBP plus oxygen. Chalo follow me. RUBP plus O2 gives PGA, phosphoglycolate. RUBP plus O2 gives PGA, phosphoglycolate. Right? Phosphoglycolate, glycolate, glyoxylate, glycine. Phosphoglycolate, glycolate, glyoxylate, glycine. Right? Okay. Two molecules of glycine. One CO2 is given out. 3C serine is formed. Serine, hydroxypyruvate, glycerate, phosphoglycerate enter in C3 cycle. Chalo ratta. Photo respiration. RUBP plus O2. PGA, phosphoglycolate, glyoxylate, glycine, serine, hydroxypyruvate, glycerate, 3PGA. पहले ये रट्टा होना चाहिए। So, write down the things. So, पहले रट्टा मारना है और अभी ब्रीफिंग के साथ साथ why this process happens. So, let us again revise the thing. We discussed C3 plant. C3 plant performs C3 cycle for the formation of glucose. C3 plant which are performing C3 cycle are having a crucial enzyme is Rubisco, RUBP carboxylase and oxygenase. It has ability to react with CO2 as well as oxygen. Its working is conditional. When the concentration of CO2 is high, when the concentration of CO2 is high and low temperature. Okay, temperature is low, CO2 concentration is high. In that situation, RUBP combined with CO2, it causes carboxylase activity, initiates C3 cycle. Right? So RUBP ने खुद के 5 कार्बन डाले, प्लांट ने खुद के 5 कार्बन डाले, बाहर से एक CO2 आया। राइट, तो प्रॉफिट के बिजनेस में एक कार्बन 1,6 कार्बन ग्लूकोज बनाने के लिए गया, 5 कार्बन रिसाइकल हो गए। तो ये C3 साइकिल when CO2 is available from the atmosphere is significantly producing glucose.
But same C3 plant, which is a temperate plant designed for low temperature, is cultivated or facing high temperature. Then at high temperature and low CO2 concentration, this rubisco is going for oxygenase activity only, and it causes a chemical reaction between RuBP and O2. So RuBP plus O2. Okay. So RuBP plus O2 means RuBP is 5 कार्बन, एटमॉस्फेयर का एक CO2 नहीं आया, तो 5 कार्बन ही प्लांट के पास रहे. तो ये बिजनेस शुरू करने के लिए प्लांट ने खुद के 5 कार्बन डाले, एटमॉस्फेयर से 0 कार्बन आया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आया. Right? Okay. So this 5C RuBP plus O2 gives you 2 segments. One is 3C, 5C divided to produce 3C, phosphoglyceric acid, and other one is phosphoglycolate. And phosphoglycolate से C2 cycle शुरू होती है. Now tell me why the cycle is called C2 cycle? Because the first stable chemical produced in the cycle containing 2 carbon atoms. Okay. So phosphoglycolate, which is 2 carbon atom containing chemical, undergo dephosphorylation. So phospho is removed and what you get is glycolate. This first step occurs in chloroplast and glycolate is transported to peroxisome. In peroxisome, this glycolate, which is a 2C chemical, combined with one more molecule of oxygen, H2O2, hydrogen peroxide is produced, which is a poisonous chemical, is detoxified in peroxisome because it has those enzymes. After oxidation of glycolate, look at the word, glyoxylate is formed containing 2 carbon atoms. Glyoxylate is amminated to form glycine, which is a amino acid. अब ये नाम धीरे धीरे याद होंगे. बायोमोलिक्यूल लेसन में हम ये सब एग्जाम्पल सीखेंगे. तो पहले हमको यहाँ पे ये नाम ध्यान में रखना है. So it produces amino acid glycine. Glycine is transported to mitochondria. So one time process occur, you get one glycine. Second time process occur, now the plant chloroplast has performed this reaction in peroxisome, this reaction, and in mitochondria it has 2 glycine. So 2 glycine, 2C plus 2C. So you have 4C. Okay, plant has 4C. Among the 4 carbon, 1 CO2 is lost. 4 में से 1 कार्बन बाहर चला गया, वेस्ट हो गया. लेकिन ये जो प्रोसेस प्लांट ने शुरू की है, उसमें ये 4 कार्बन बाहर जा रहे थे, लेकिन प्लांट ने एक को 25% को वेस्ट होने दिया, 75% फिर से कॉन्जर्व कर लिया इन द फॉर्म ऑफ सेरीन. सो ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन, 2C plus 2C, 4C, 1 carbon is given out, and what you get? A 3C chemical, serine. Serine transported from mitochondria to peroxisome. In peroxisome, serine is converted to hydroxypyruvate, then form glycerate, glyceric acid. Glyceric acid transported to chloroplast. In chloroplast, glyceric acid में एक phosphate add होगा, so it will be converted to 3-phosphoglycerate, 3-PGA, and 3-PGA enter in C3 cycle. Okay, so लेकिन ये प्रोसेस में ये C3 साइकिल में जो PGA आया वो RuBP का ही कार्बन लेके आया. देखो RuBP के ही कार्बन घूमते 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 आके तो प्लांट का खुद का ही कार्बन यहाँ पे आ गया और C3 साइकिल हो रहा है, लेकिन नया ग्लूकोज नहीं बनेगा. ये प्रोसेस समझ रहे हो ना? डे टाइम है, ATP NADPH अवेलेबल है, but just because CO2 is not available, the plant is unable to prepare glucose. Right? तो आप बोलेंगे मैम ये प्रोसेस हो क्यों रहा है? When the plant is C3 plant, a temperate plant is facing high temperature, low CO2 concentration, then what happened? The light reaction which is occurring and trapping ATP and NADPH, right? Those ATP, NADPH are used in dark reaction, but the dark reaction is not having sufficient carbon dioxide. C3 plant को C3 साइकिल करने के लिए sufficient CO2 एटमॉस्फेयर से मिल ही नहीं रहा है. लाइट रिएक्शन से ATP NADPH2 आ रहा है, ATP NADPH आ रहा है, लेकिन CO2 नहीं आ रहा है, तो C3 साइकिल से ग्लूकोज नहीं बन पा रहा है. तो ATP NADPH एनर्जी रिच केमिकल एक्यूमुलेट हो रहे हैं. These energy rich chemical which are not sufficiently used in C3 cycle because of less availability of CO2 may cause damage to the plant. These are called photooxidative effects. Because of high energy chemicals,
produced in the plant. They are not used in the dark reaction. The plant faces many problematic situations. It produces some oxidation of the chemicals, because of which the plant may suffer from many disorders. Plant may even die. तो ये जो डैमेज कॉजिंग केमिकल प्लांट के अंदर है, उनको नलिफाई करने के लिए, मतलब एटीपी एनएडीपीएच ये जो एनर्जी रिच केमिकल लाइट रिएक्शन से आ रही है, वो नलिफाई करने के लिए प्लांट ने ये प्रोसेस शुरू की, राइट. तो ये प्रोसेस में एटीपी एनएडीपीएच यूज भी हो जाएंगे, एनर्जी रिच केमिकल ज्यादा यूज भी हो जाएंगे, एंड वन मोर थिंग दैट फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेजेस जो प्लांट को हो रहे हैं वो कम होंगे. So it appears wasteful because glucose is not synthesized. Light is available, ATP, NADPH are produced, but because CO2 is less available, plant cannot prepare the glucose. Yeah, so it is a wasteful process. But during this wasteful process, whatever damages are happening to the plant, they are reduced by this process. ये प्रोसेस में ये जो केमिकल बनते हैं, ये केमिकल प्लांट को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेजेस से बचाता है. So though it appear wasteful process, it is protecting plant from photo oxidative damages. So it is in that way significant for the plant. समझ रहे हो? So photo respiration involve how many organelles? Answer the question. 3 organelles. Which are they? Chloroplast, peroxisome and mitochondria. Okay, why this process occurs? Because CO2 concentration in atmosphere is less and temperature is high. Which enzyme catalyzes oxidation of RuBP? Rubisco. What are the products? RuBP plus O2 gives you what? A 3C chemical, PGA, and a 2C chemical, phosphoglycolate. Where does the process start? In chloroplast. Okay, how many times in this process, how many times oxygen is accepted? See, यहाँ पे oxygen, यहाँ पे. So 2 times the chemicals are oxidized. Right? Okay, then in which organelle H2O2 is produced? Peroxisome. Where it is detoxified? In the peroxisome only. Right? Okay, which is the first amino acid produced in the cycle? It's glycine. Okay, what is the percentage of carbon is lost in the process? What is the percentage of carbon lost in the process? See, 2C, 4 carbon है आपके पास. 4 में से 1 carbon means 25% of carbon is lost. How much is conserved? 75%. Among the 4, 1 is lost, 25%. 3 are conserved, 75% are conserved. Which chemical is transported back from mitochondria to peroxisome? Serine. Which is a 3C chemical? Which is the first 3C chemical produced in the cycle? Serine. Right? Okay. Which chemical is regenerated? Is 3-PGA. Why it is called wasteful process? Because during daytime when light is available, ATP, NADPH are available, the plant is unable to prepare glucose. So it is wasteful process. Why the plant is unable to produce glucose? Because CO2 is not available. Glucose बनाने के लिए बाहर से CO2 आना जरूरी है. Then why the process is happening? To protect the plant from high temperature, energy rich chemicals which are produced in the cell, in the plant, green cell, may cause photooxidative damages. Okay, so these chemicals reduce those damage. So it is in that way protective in function. In which plant organ the process occurs? The process of photorespiration occur in green plant cells. Okay, C3 plant, C4 plant, the process occur in C3 plant because atmospheric CO2's concentration is regulating functioning of riboscope. C4 plant में PEP carboxylase होता है. PEP carboxylase has high affinity for CO2. So in that situation, PEP carboxylase जब हो तो प्लांट को एटमॉस्फेरिक में CO2 कम है ज्यादा है ये प्रॉब्लम फेस ही नहीं करना पड़ता है. Are you getting the significances of
PEP carboxylase which is found in C4 plant. तो C4 प्लांट ने बेनिफिशियल काम क्या किया? C4 प्लांट ने मेसोफिल सेल में PEP कार्बोक्सिलेज की मदद से, जो CO2 से हाई एफिनिटी रखता है, PEP कार्बोक्सिलेज की मदद से उसने मैलिक एसिड बना के CO2 को फिक्स करके रख दिया और बंडल शीथ सेल में RUBP को संभाल के रखा और मेटाबॉलिक रिएक्शन द्वारा बंडल शीथ सेल में हमेशा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखा। तो बंडल शीथ सेल में जहां पे रुबिस्को की एक्टिविटी है वहां पे प्लांट्स ने मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा के ज्यादा CO2 अवेलेबल करवा के दिया, तो RUBP ने कार्बोक्सिलेशन ही करवाया। So C4 plant don't show photorespiration. C3 plant show photorespiration when the temperature is high and CO2 concentration is less. Right? Okay. Chalo. Just go through it. Take out page number 221 from NCERT. Page number 220. Sorry. Come to page number 220 of NCERT. Photorespirations NCERT reading. We are on page number 220. See, let us try and understand one more process that create an important difference between C3 C4 plant. C3 plant shows photorespiration when high temperature and low CO2 concentration is there. C4 plant don't show photorespiration is the difference we have written. Okay, see, the difference is the process of photorespiration. To understand photorespiration, we have to know a little bit more about the first step of Kelvin pathway. What is the first step of Kelvin pathway? CO2 plus RUBP. Right? If CO2 is available, CO2 plus RUBP. If CO2 is less available, then O2 plus RUBP. So this is the additional information you are getting because of this process. The first CO2 fixation step. This is the reaction where RUBP combines with CO2 to form two molecules of 3-PGA. RUBP combine to form two molecules of 3-PGA. यहाँ पे एक CO2, one CO2 plus one RUBP gives you two molecules of 3-PGA that we know. The reaction is written, which is catalyzed by Rubisco. RUBP plus CO2 on the arrow, it is written Rubisco to form two molecules of 3-PGA. Rubisco, that is the most abundant enzyme in the world, underline MCQ. It is most abundant enzyme, that is protein. Because this is a proteinaceous enzyme, majority of the enzymes are made up of protein. So this is most abundant protein, this is most abundant enzyme in the world. You wonder why? Because many tropical plants, temperate plants and subtropical plants and aquatic plants are performing photosynthesis. All photoautotrophs are having Rubisco. So it is one of the most abundant protein enzymes of this plant. Now listen. Rubisco is characterized by the fact that its active site can bind to both CO2 and O2. Now what is active site? Underline करो. Active site ये शब्द आपको अभी बहुत अच्छे से नहीं समझेगा, लेकिन just briefing. Just imagine this is a Rubisco molecule. You know, Rubisco is an enzyme that is protein. Proteins are made up of amino acids, right? Amino acid की linear माला, okay, linear chain of amino acid, primary structure. If it is coiled like a telephone wire, it is secondary structure. It is again coiled. टेलीफोन की वायर फिर से खुद के साथ कॉइल कर रही है, that is tertiary structure, right? So many amino acids are linked, they are coiled in a particular way so as to get the tertiary structure of protein. Because of this specific coiling, the protein creates some active site. मतलब ये ऐसा प्रोटीन ये हो गया, right? तो इसकी वजह से यहाँ पे ओके, ये एक अमाइनो एसिड की माला, ये दूसरी अमाइनो एसिड की माला, ये कॉइल हो गई, राइट? और ये यहाँ पे इस प्रकार से एक्टिव साइट बन गई. दिस एक्टिव साइट कैन रिकॉग्नाइज इट्स ओन रॉ मटेरियल. ओके, सो एक्टिव साइट, राइट डाउन,
is the site of protein molecule, is the site of protein molecule which recognizes raw material, which recognizes raw material. बस इतना ही ध्यान में रखो. So this is a Rubisco molecule. This Rubisco molecule has active site. Just imagine its active site is like this. This active site is like this. This active site is sensitive. This active site is sensitive to CO2 as well as O2. This enzyme can react with CO2 as well as O2. If CO2 is abundant, it will react with CO2. If O2 is abundant, it will react with O2. Okay, so Rubisco has an active site which is sensitive to CO2 as well as O2. That's why if CO2 is more, it will combine with CO2 and initiate C3 cycle. If O2 is more and CO2 is less, it will combine with O2 and go for photorespiration. So problem lies with Rubisco because Rubisco has active site for CO2 as well as O2. Okay, so ये point हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है. इसका explanation हमको बायोमोलिक्यूल के एंजाइम्स में अलग से मिलेगा. Okay, so just remember. So see, the fact is that its active site can bind to both CO2 and O2, hence the name RUBP carboxylase oxygenase. Can you think how this could be possible? Okay, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कॉइलिंग की वजह से वो दोनों केमिकल को रिकॉग्नाइज करते हैं. Can you think how this could be possible? Rubisco has much greater affinity for CO2 than O2. Underline. If you provide 100 molecules of CO2 and 100 molecules of O2, in this situation, it will prefer to go with CO2. अगर दोनों इक्वल अमाउंट में है तो इट विल प्रेफर टू गो विथ CO2. सो अंडर नॉर्मल कंडीशन Rubisco हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2. ध्यान में रखो MCQ के लिए, यहाँ पे पक्का मिस आउट करोगे. Rubisco has more affinity for CO2 in normal condition. But if CO2 concentration drastically reduces and O2 increases, then only it will go for oxygenase activity. Okay, so see. It has much greater affinity for CO2 than O2. Imagine this would happen if this were not so. This binding is competitive. Rubisco का CO2 या O2 के साथ काम करना ये कंपटीशन में चलता है. CO2 ज्यादा तो CO2 के साथ जाएगा, O2 ज्यादा तो O2 के साथ जाएगा. तो ये दो केमिकल CO2 and O2 compete with each other for this active site. So this is competition between them. This binding is competitive. It is the relative concentration of O2 and CO2 that determines which of the two will bind the enzyme. If CO2 is more, it will bind with CO2. If O2 is more, it will bind with O2. See, in C3 plants, some O2 does bind to Rubisco, and hence CO2 fixation is decreased. Okay, see, this classroom is chloroplast. CO2 entered in, O2 entered in. Right? I am Rubisco. I am sensitive to CO2 as well as O2. But my attraction is more towards CO2. So I'll try to bind up with CO2 more. But अगर ये क्लास में 100 Rubisco मॉलिक्यूल है तो 100 में से 90 मॉलिक्यूल CO2 से कंबाइन करेंगे, लेकिन 10 लोग तो ऑक्सीजन से कंबाइन कर ही लेंगे. उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट धीरे धीरे कम होता है. अगर CO2 बहुत ज्यादा है तो 100 के 100 CO2 के साथ कंबाइन करेंगे. अगर CO2 90 और O2 10 है तो CO2 से बाइंडिंग ज्यादा होगा लेकिन O2 से थोड़ा होगा. CO2 का कॉन्सेंट्रेशन और कम हो गया. राइट, व्हाट विल से कि समझ लो 20 CO2 है और 80 ऑक्सीजन आ गए, तो वो कंडीशन में RUBP एंजाइम
O2 से ज्यादा रिएक्ट करेगा क्योंकि उसको CO2 मिल ही नहीं रहा है. So CO2 O2 are competing with each other for reacting with Rubisco. Right? ये परसेंटेज पे डिपेंड करता है. CO2 ज्यादा तो RUBP प्लस CO2, CO2 कम तो RUBP प्लस O2. दोनों एक जैसे है तो CO2 प्लस RUBP प्लस CO2 ये रिएक्शन ज्यादा होगा. ओके, सो C3 प्लांट में जैसे ऑक्सीजन ज्यादा एंटर करता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा, तो लीफ के स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन गया अंदर ज्यादा, तो रुबिस्को कंबाइन हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो ये प्रोसेस शुरू होगी. अगर रुबिस्को ने कंबाइन किया CO2 के साथ तो C3 साइकिल बनके ग्लूकोज होगी. राइट? सो दिस इज हाउ द प्रोसेस occurs. In C3 plant, some O2 does bind to Rubisco and hence CO2 fixation is decreased. Here, the RUBP, instead of being converted to two molecules of BGA, bind with O2 to form one molecule of phosphoglycerate, RUBP plus CO2. If this reaction happens, you get one molecule of 3-PGA and one molecule of phosphoglycolate. Right? See. RUBP, instead of being converted to two molecules of PGA, it binds with O2 to form one molecule of phosphoglycerate and one molecule of phosphoglycolate in the pathway called photorespiration, and the process photorespiration started. In the photorespiration pathway, there is neither synthesis of glucose. Right? अगर photorespiration ये process हो रही है तो यहाँ पे C3 चलेगी, लेकिन बाहर से CO2 नहीं आ रहा है, तो प्रॉफिट का बिजनेस ग्लूकोज बनाना नहीं होगा, सिर्फ PGA रिसाइकल RUBP करता रहेगा. ओके, इन द फोटोरेस्पिरेट पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ATP फॉर्मेशन. ये प्रोसेस में ना ही ATP बनता है ना शुगर बनता है. रादर इट रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ CO2. बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस इट रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ CO2. अमंग द 4 कार्बन, one CO2, that is 1/4, that is 25% of carbon is wasted. In the photorespiratory pathway, there is no synthesis of ATP and NADPH. ये प्रोसेस में ATP NADPH भी नहीं बनते हैं, रादर जो लाइट रिएक्शन में बने पड़े हैं, डैमेज कॉजिंग है, ओके, वो एनर्जी रिच केमिकल इनके एक्टिवेशन के लिए यूज होते हैं और प्लांट को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेजेस से बचाते हैं. Therefore, photorespiration is a wasteful process. So it sounds wasteful because no ATP, no NADPH, no glucose is formed. In C4 plant, photorespiration does not occur. This is because they have mechanism that increases the concentration of CO2 at the enzyme site. What is done? What is the strategy used by C4 plant? Atmospheric CO2-O2 balance may change. So, to deal with that, C4 plant appointed RUBP carboxylase की जगह PrEP carboxylase. ओके, देखो C4 प्लांट बड़ा वाइस प्लांट है. C4 प्लांट को समझ में आया कि RUBP के सिवा तो अपना काम होता नहीं, लेकिन RUBP ऐसा एंजाइम है जिसका भरोसा नहीं, बेभरोसे का एम्प्लॉई है वो. ओके, वो ग्लूकोज बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो कभी कभी ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ओके, और वेस्टफुल प्रोसेस शुरू करेगा. तो C4 प्लांट ने और एक एम्प्लॉय को हायर करके रख लिया, दैट इज PEP कार्बोक्सिलेज. तो मैंने बोला ये क्लासरूम फ्लोरोप्लास्ट है, इसमें 2 कंपार्टमेंट बन गए, मेसोफिल और बंडल शीट. बाहर से आए वाला CO2 बाहर के कंपार्टमेंट में लॉयल एम्प्लॉय के साथ PEP कार्बोक्सिलेज के साथ रिएक्ट करेगा. PEP कार्बोक्सिलेज CO2 के साथ ही रिएक्ट करता है क्योंकि उसकी एक्टिव साइट ऑक्सीजन को सेंस ही नहीं करती, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता. तो PEP कार्बोक्सिलेज CO2 से रिएक्ट करेगा, मैलिक एसिड बनाएगा, और अंदर के कंपार्टमेंट में देखो एटमॉस्फेयर बाहर से CO2 O2 दोनों अंदर आए, लेकिन PEP कार्बोक्सिलेज ने सिर्फ CO2 से रिएक्शन की, मैलिक एसिड बनाया, और अंदर के कंपार्टमेंट में मैलिक एसिड आ गया, और अंदर के कंपार्टमेंट में मैलिक एसिड ने CO2 देता गया. तो अंदर जो बैठा था रुबिस्को, बदमाश एम्प्लॉय, उसको CO2 के सिवा दूसरा कोई मिला ही नहीं, तो उसकी जो एक्टिव साइट थी उसने सिर्फ CO2 से रिएक्ट करना था. सो व्हाट इज डन बाय C4 प्लांट?
is that in the bundle sheet cell, the RUBP is exposed to always higher concentration of CO2 by bringing CO2 in by metabolic reactions. So this is a wise decision. Atmospheric CO2 से डील करेगा पेप कार्बोक्सिलेज, और मेटाबॉलिक CO2 जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बंडल शीट्स में ज्यादा ही होगा, वहां पे बिठाया RUBP को, तो फोटो रेस्पिरेशन का सवाल ही नहीं उठता, राइट? सो दिस इज अ वाइज स्ट्रेटेजी डन बाय C4 plants. C4 plant photo respiration does not occur. This is because they have mechanism that increases the concentration of CO2 at enzyme site. Rubisco जहां पे है वहां पे CO2 का concentration हमेशा ज्यादा रहेगा. This takes place when C4 acid, that is malic acid or aspartic acid, form mesophyll is broken down in bundle sheath cell to release CO2. This results in increase of intracellular concentration of CO2. Malic acid, aspartic acid, CO2 अंदर लाते जाएंगे तो बंडल शीट में CO2 का concentration हमेशा ज्यादा रहेगा. In turn, this ensures that the Rubisco functions as a carboxylase, minimizing the oxygenase activity. So C4 plant don't perform photorespiration. Now that you know that the C4 plant lack photorespiration, you probably can understand why productivity and yield are better in these plants. Okay, अब wasteful process नहीं हो रही है, plant दिन भर photosynthesis कर रहा है, तो obviously glucose ज्यादा बनेगा. We'll discuss this point in next lecture. Why C4 are more efficient. Okay, so right now I'm just saying दिन भर photosynthesis हो रहा है, wasteful photorespiration हो ही नहीं रहा है, तो C4 plant obviously ज्यादा glucose बनाएगा. In addition, these plants show tolerance to high temperature. Okay, और additional point लिख लो, low water content, tolerance to high temperature and low water content. Based on the above discussion, can you compare plants showing C3, C4 plants? So now page number 221. ये हमने already discuss किया है partly differences between C3, C4. Next lecture में हम ये और detail में सीखेंगे. Okay, so please learn the cycle first. RUBP plus O2, RUBP plus O2, giving you PGA phosphoglycolate, PGA phosphoglycolate, 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 glycolate, glycolate, glyoxylate, glyoxylate, glycine, glycine, serine, serine, hydroxypyruvate, hydroxypyruvate, glycerate, glycerate, phosphoglycerate, phosphoglycerate. This is C2 cycle photorespiration. C2 cycle photorespiration. Draw the diagram.